नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी. So Grantaraj Srimad Bhagavatam is the king of all the education of Vedic literature. In this Bhagavatam, there are various pastimes of different devotees of Lord. And one of the devotee of Lord is Maharaj Chitraketu. Uh, So Maharaj Chitraketu, he was a very powerful king, and he had a big empire. He had lots of wealth, lots of power, lot of strength. He had many queens as well. You know, in those times, the king used to have many queens. So this is the story of Satyuga, where Maharaj Chitraketu was ruling a kingdom called as Surasena. Maharaj Chitraketu had everything what one can imagine. आज आज की तारीख में आप जो भी ऐश्वर्य मांगे उससे भी 10 गुना ज्यादा ऐश्वर्य महाराज चित्रकेतु के पास था. Only thing Chitraketu did not have is he did not have any child. So Maharaj Chitraketu, he was not happy. Even after having all the material wealth, Maharaj Chitraketu was lacking a child. Because he was wondering that who will look after my kingdom when I die. Because it is a duty of a king to give the kingdom to a suitable king so that he can retire happily. So Maharaj Chitraketu, he was lamenting all the time. One day, a great sage, a sadhu, his name is Angira Rishi. Angira Rishi came to the palace of Maharaj Chitraketu. And Maharaj Chitraketu welcomed Angira Rishi by giving him asana, by giving him some food, water, appreciating him. And he gave nice hospitality, nice welcome. And at that time, then Nangira Rishi was very happy. But he saw that Maharaj Chitraketu was unhappy. खुश नहीं थे महाराज चित्रकेतु. उनके चेहरे के ऊपर से थोड़ा सा दुख दिखाई दे रहा था. देखिए, आप लोग इंडिया से जब थंडर पे आए तो बहुत खुश थे या नाराज थे, कैसे थे? बहुत खुश थे. फिर थंडर पे आके थोड़ा खुशी चला गया, सब खुश. क्यों? यहाँ के सब मालूम हो गया कि it's not as good as, right? So the grass on the other side is always green, they say, right? So similarly, everybody thinks that when you are there in India, everybody wants to come to Canada. And when you are in Canada, everybody wants to go to, what is this going on? Are you gone crazy or what? Why don't you stay wherever you are then? So similarly, Maharaj Chitraketu had money, but no child. And one who has child wants. Do you see that? So the person who has money is not happy because he has no child. So what is the source of happiness? Child, right? But the person who has child is looking for money. So what is the source of happiness? What is happiness now? Money or child? Or both? The people who have both are also not happy. Do you know that? So what is happiness? Hare Krishna Prabhu. So here is the thing, in this material world, everybody is looking for happiness. But nobody knows where is the happiness. The person who has one thing thinks that happiness is in something else. Huh? What phone you have? iPhone, Samsung, or whatever phone you have, right? So people who have one phone thinks that, oh, if I have that phone, I'll be more happy. But people who have that phone, you think I will be. Now you are students, right? So you might be thinking that if I get PR, I will be happy. But people who have PR, एक बार citizenship आ जाए बस. People who have citizen, एक बार शादी हो जाए बस. And people who are married, एक घर हो जाए बस.
People who have a house, एक गाड़ी आ जाए. So you see, the happiness is chasing you, or you are chasing happiness. It's both in the air. No, it's all actually there is no happiness. You are just chasing a mirage. Mirage means illusion. Right? So Maharaj Chitraketu had everything, but he was not happy. Why? Because he was chasing an illusion. He was thinking, oh, wish I have a child. So when Angira Rishi saw Maharaj Chitraketu, oh, he was not happy. Why are you not happy? Oh, Maharaj, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन मैं आपसे बता देता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास कोई लड़का नहीं है, बच्चा नहीं है जो मेरा आगे राज्य चलाएगा. तो क्या आप मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं? तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि देखिए राजन, आपके भाग्य में बच्चा ही नहीं है. आपके भाग्य में, किसी के भाग्य में नहीं रहता है, तो क्या करें? तो कहां से लाए? तो महाराज चित्रकेतु ने कहा कि आप तो जानते हैं सब कुछ. हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण. तो महाराज चित्रकेतु ने कहा कि आप कुछ भी करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे एक बच्चा हो जाए. तो अंगिरा ऋषि ने एक यज्ञ किया और यज्ञ से उनको प्रसाद दिया और कहा कि ये प्रसाद आप अपनी कोई भी एक क्वीन, उनके पास तो बहुत सारी रानियां थी, तो एक रानी है उसको दे दीजिएगा जो आपको लगे कि योग्य है माता बनने के लायक. तो महाराज चित्रकेतु ने वो प्रसाद उनकी पहली रानी कृतद्युति उसको दे दिया. और कृतद्युति से उनको एक पुत्र हुआ. जब अंगिरा ऋषि वहां से जा रहे थे, महाराज चित्रकेतु को कहा कि मैं आपको ये बच्चा का तो आशीर्वाद दे रहा हूं, लेकिन ये बच्चा आपका हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा. तो महाराज चित्रकेतु ने सोचा कि अगर बच्चा नहीं है तो ज्यादा दुख है, और बोल रहे हैं कि बच्चा होने के बाद भी ये आपके शोक का कारण बनेगा, तो ये क्या हो गया अभी गड़बड़. लेकिन उन्होंने सोचा ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, तो बच्चा मेरी बात नहीं सुनेगा, बच्चे पे कुछ गलत आदतें हो जाएंगी, चलो ठीक है उसको सुधार लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो उन्होंने आशीर्वाद दे लिया और अंगिरा ऋषि वहां से चले गए. जब महाराज चित्रकेतु ने ये प्रसाद अपनी पहली पत्नी कृतद्युति को दे दिया, हरे कृष्ण, सो देन एट दैट टाइम कृतद्युति को एक लड़का हो गया, बच्चा. एंड दैट चाइल्ड वाज वेरी क्यूट, एक्चुअली वेरी स्वीट, very cute child. And Kritadyuti, she was also looking after the child very carefully, very nicely. And the king Chitraketu was also attached to the child, because एक ही लड़का था और उनकी बहुत तमन्ना थी. So he became the very favorite of the Maharaj Chitraketu. And as Maharaj Chitraketu was loving the child, and the child was always with mother, so King Chitraketu was spending most of his time with first queen. So all the other queens, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. So महाराज चित्रकेतु अपना ज्यादातर समय पहली रानी के साथ बिताते हैं, कृतद्युति के साथ. और जब बाकी रानियों को लगने लगा कि महाराज मेरे सामने ध्यान नहीं दे रहे, तो एक प्रकार की ईर्ष्या आती है. तो जब ईर्ष्या आती है तो क्या होता है अगला कदम? ईर्ष्या से क्रोध, है ना. और क्रोध के बाद क्या होता है नेक्स्ट? जब क्रोध आ जाता है तो क्या होता है? क्रोध आता है तो क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, दिमाग नहीं चलता है. आपने देखा है, आप क्रोध होता है तो आप गलत बातें बोलते हैं, गालियां देने लगते हैं,
एक दूसरे को मारने लगते हैं। कुछ लोग क्रोध में, आदमी कुछ भी कर सकता है ना। तो क्रोध में रानियों को ईर्ष्या और क्रोध दोनों आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि महाराज चित्रकेतु के पास समय नहीं था उनको समय देने के लिए। देखिए, हमारे जीवन में कभी किसी को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी कथा है यहाँ पे कि महाराज चित्रकेतु ने क्या किया, तो दूसरी रानियों को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया। हमारे जीवन में किसी को हम निग्लेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आदमी भी क्रोधित हो जाएगा, देखो हमें निग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको भी अपमान लगेगा। इसलिए हमारे आजू बाजू के व्यक्ति कितना भी कुछ भी हो, हमें उनको मान सम्मान तो देना चाहिए। थोड़ा बहुत समय, थोड़ा उनको पूछे कैसे है क्या है। किसी से हमारी बनती नहीं है, फिर भी हमें उनको मान तो सम्मान देना चाहिए, है ना? नहीं तो क्या हो जाएगा, ईर्ष्या और क्रोध, और क्रोध में फिर झगड़े होते हैं, फाइटिंग होती है, एक दूसरे से बातें होती है, ठीक बात नहीं होती फिर, है ना। तो अगर हमें सुख और आनंद चाहिए जीवन में, तो दूसरे को मान सम्मान देना सीखना चाहिए। हम दूसरे को मान सम्मान देंगे तो दूसरे हमें रिस्पेक्ट करेंगे ना। अगर हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई हमारा रिस्पेक्ट नहीं करेगा, है ना। तो महाराज चित्रकेतु की सभी रानियां नाराज हो गई क्योंकि महाराज चित्रकेतु उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि ये सब की जड़ कौन है, वो बालक है। क्योंकि बालक के कारण ही, आप सब लोग हिंदी जानते हैं ना, नहीं तो मैं हिंदी में बोलूंगा, कोई हिंदी नहीं समझेगा। आर यू ओके? तो वी कैन टॉक इन इंग्लिश ऑल्सो। आर यू ओके विथ हिंदी? वी कैन टॉक इन इंग्लिश ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। सो महाराज चित्रकेतु, when he was paying more attention to the kings, all the queens got disappointed and they devised a plan. What was the plan? They said, we'll poison this child. Na rahega baas, na bajuri basuri. So they mixed the poison in the food and gave the food to the baby. And the baby was dead. Now you see, the Maharaj Chitraketu was so much loving this child. All day and night he was spending for the baby. And he was so happy that he finally got somebody. But now the same child is dead after 5 months. So then Maharaj Chitraketu became very disappointed, very, very lamenting. All day and night he was crying. So when he had no child, he was unhappy. Then he had a child, he was happy. And now there is no child, more unhappy now, ever before. You see? So Maharaj Chitraketu became mad because he lost the child. So he stopped going to the kingdom in the palace. He never looked after the administration. He almost laid down in the bed. He got depressed actually. And he was lying in the bed like a madman. So the entire kingdom, everybody was worried that nobody is there to take care of the kingdom. What will happen? So at that time, the Angira Rishi, who gave the blessing to Maharaj Chitraketu, came there. And Angira Muni said to the Maharaj Chitraketu, he was trying to explain him the importance of relationship. You know, in our life, relationships are very important, right? Our father, mother, children, husband, wife, all these relationships are important. Is that right or wrong? Right? And these same relationships are the cause of our happiness. And the same relationship can be the cause of our sadness. Is that right? So Angira Muni said to Maharaj Chitraketu, he is explaining the scientific and the moral values of relationship in our life. That how seriously we should take the relationship. So what is Angira Rishi saying? Angira Rishi is explaining to Maharaj Chitraketu that you just lost a child, but he said, O king, what relationship does the dead body for which you lament have with you, and what relationship do you have with him? You may say that you are now related as a father and son, but do you think that this relationship existed before? 6 months back, he had no child, so he was not father. And after 6 months, the child is gone, so he is not father anymore. So something which never existed
which exists now and will not exist. What is that called as? That is called as illusion, right? Illusion means जैसे कि आप अगर डेजर्ट में जाते हैं तो एक मिराज दिखता है, लंबे से लगता है पानी है पानी है, फिर नजदीक आ गए तो और मिराज दूर चला गया और कहीं दिख रहा है ना। तो वैसे ही जीवन में देखिए, अभी आप 25-30 साल के हैं, आप में से सब लोग अंदाज से 30 साल पहले अभी आपके जो माता पिता है वो आपके माता पिता थे? शायद नहीं थे, क्योंकि आपका तो दूसरा कोई जन्म था। फिर अभी और 50-60 साल के बाद जब आपकी आयु 100 साल की हो जाएगी तब आपके माता पिता और कोई रहेंगे, है ना। तो देखिए कि अभी मेरी आयु है 53 ईयर्स, तो आफ्टर अनदर से 20-30 ईयर्स दिस बॉडी विल नॉट एग्जिस्ट. Then what will happen? Me, my family, my relation, will that exist or no? It will be finished, right? After at the most 20 years, 25 years, this body will of mine will be finished. फिर मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, इनके साथ का संबंध मेरा फिनिश हो गया, फिर नया चालू होता है संबंध मेरा। जहां भी जन्म हो जाएगा वापस, फिर वहां से नया रिश्ता, है ना। जैसे आप ट्रेन में बैठते हैं और एक ट्रेन छोड़ते हैं, आपका पैसेंजर कोई अलग रहता है, फिर दूसरी ट्रेन में जाते हैं तो पैसेंजर अलग हो जाता है। वैसे ही जीवन में अपने साथी बदलते रहते हैं, है ना। जैसे कि आप में से काफी लोग, कुछ लोगों की शादी नहीं हुई है अभी तक, तो कुछ साल के बाद आपकी शादी हो जाएगी, तो जिसके साथ आपकी शादी हो जाएगी उसके साथ आपका फिर संबंध बनेगा, फिर बच्चे, है ना। तो फिर जो आज नहीं है वो कल के संबंध रियल हो जाएंगे और परसों वही संबंध खत्म भी हो जाएगा, है ना। तो अंगिरा ऋषि बता रहे हैं, डज इट ट्रूली एग्जिस्ट नाउ और विल इट कंटिन्यू इन द फ्यूचर? जो संबंध आज आपके हैं, क्या वो भविष्य में भी रहने वाले हैं? यस और नो? नहीं रहेंगे, है ना। क्योंकि ये जो है, ये एक इल्यूजन यानी जब आप मूवी थिएटर में जाते हैं, व्हेन यू गो टू अ मूवी, sometimes in the movie what you see a terror scene, then you get scared, right? Is that right? And then as soon as you come out of the movie, the terror is gone, because that was not real. Sometimes in a dream you see a lion and you get up from the dream, huh? And then when you get up, the lion is gone, right? देखिए, आप जब सुबह जागते रहते हैं तो आपका सपना आप भूल जाते हैं, है ना। और जब आप रात को सपने में रहते हैं तो सुबह भूल जाते हैं दिन में, है ना। देखिए, रात को आप जब सोते हैं तो बैंक बैलेंस क्या है, क्या जॉब है, कुछ याद आती है? खाना पीना भी याद नहीं, बस सो जाते हैं, है ना। तो क्या सही है, रात सही है या दिन सही है? क्योंकि दिन का रात में भूल जाते हैं, रात का दिन में भूल जाते हैं, तो विच इज ट्रू, डे और नाइट? जैसे अभी मैंने बता रहा था कि जिसके पास पैसे हैं लेकिन बच्चा नहीं है, तो क्या सोचते हैं कि बच्चा है तो खुशी मिलेगी। जिसके पास बच्चा है लेकिन पैसे नहीं है, तो क्या सोचते हैं? पैसे है तो खुशी मिलेगी, है ना। तो जिसके तो खुशी क्या है, बच्चा या पैसे? वो तो मालूम नहीं है, क्योंकि इसके पास ये है तो वो है, वो नहीं है वो है तो ये नहीं है। वैसे ही रात को जो दिखता है ड्रीम में, वो सही है, या दिन में दिखता है वो सही है? क्योंकि दोनों डिसअपियर होता है ना। देखिए, आज जो संबंध है मेरा और आपका, देखिए हम सब मिले हैं जैसे कि मित्र है, अभी अभी कुछ साल हो जाएंगे, 4-5 साल, तो आप में से सब लोग चले जाएंगे अलग अलग जगह। शायद हम वापस मिले या ना मिले, है ना। शायद नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखिए मंदिर हो गया आज से 12-13 साल हो गए, है ना। काफी स्टूडेंट्स आए और काफी स्टूडेंट्स चले गए अपने द्वार। कहाँ गए क्या मालूम नहीं, अभी कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं, है ना। कुछ कुछ स्टूडेंट्स आए और हमने देखा हमारे सामने उनकी शादियां हो गई, बच्चे हो गए, वो भी अभी भी। तो देखिए जीवन कैसे चेंज होते रहता है और संबंध भी हमारे बदलते रहते हैं ना। तो अंगिरा मुनि कहते हैं कि हे राजन, आप जिस बच्चे के लिए रो रहे हो, क्या सच में वो आपका बच्चा है? क्योंकि जो नहीं था और हुआ और वापस नहीं हुआ, तो वो आपका कैसे हो गया, है ना। तो ये अंगिरा मुनि उनको बता रहे हैं। अंगिरा मुनि सेइंग फर्दर, ओ किंग,
as small particles of the sand sometimes come together and are sometimes separated due to the force of waves. In the water, the sand particles come together and separate, come together and separate. The living entities who have accepted the material body sometimes some come together and sometimes separate. So how should we take this? Do not take delusion very seriously. What is that? Do not take delusion very seriously. What does that mean? Do not get disappointed by the things which happen in your life. Sometimes you will fail. But what is the good news when you fail? The next step is success. When you are victorious, what is the next thing? Failure, right? जब आप हारे हुए हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? जीत है. और जब जीते हुए हैं तो नेक्स्ट स्टेप हार है ना? When you are at the top, what is the next step? Come down. When you are at bottom, go up. Which is better, up or down? बोथ तो नहीं मिल सकता है ना, ऊपर या नीचे, दोनों में से एक चूज करना है. आपको नीचे है तो ऊपर जाने का रास्ता है, ऊपर है तो नीचे. कौन सा बेटर है? ऊपर. तो फिर नीचे आओ. और आपके लिए तो नीचे का रास्ता अच्छा है. Failure leads to success because from failures what happens? You learn, right? And when you get a success, there is a chance you are going to fail now because the challenge is going to grow. So which is better, failure or success? Failure is better because the failure gives you a scope to go up, right? So failure becomes your stepping stone to success, right? So जिसके पास बहुत सक्सेस है उसका चांसेस ऑफ फेलियर ज्यादा है, और जिसके पास ज्यादा फेलियर है उसके पास chances of success are more. So which is better? It is the way you look at it. Head is better or coin is better, tail is better, right? So which way you are looking at it, right? So महाराज चित्रकेतु जिनके पास बच्चा नहीं था तो बहुत दुखी थे, फिर बच्चा हो गया तो खुश हो गए, और बच्चे की मृत्यु हो गई तो दुखी हो गए. तो which was better, not to have a child or not to have a child? Well, you don't know. श्री गौर निताय की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री राधा व्रजवत्सल, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, श्री गिरिराज धरण की, श्रील प्रभुपाद की. So this is the question of understanding the life, because the success and failure, they are all relative. What is that? Success and failure are relative. For Arjuna, when Arjuna failed and he was depressed, he surrendered to Krishna, and Krishna showed him the path of eternal success. So failure was better for Arjuna because he could surrender to Krishna. If Arjuna could not have failed, what would have happened? Arjuna would have lost the war. Yes or no? अगर अर्जुन अपने बलबूते पे युद्ध करता तो क्या होता? उसकी पराजय निश्चित थी, क्योंकि भगवान नहीं थे उसके साथ अभी, है ना. सामने कौन थे? भीष्म पितामह थे. लेकिन जब अर्जुन भगवान को शरणागति हो गए तो भगवान ने पूरा युद्ध अपने हाथ बदल दिया, है ना. तो जब जीवन में दुख आता है तो आदमी कहाँ जाता है? भगवान के पास जाता है. जो सुखी आदमी कभी भगवान के पास नहीं जाता है, वो सोचता है कि मेरा पैसा ही भगवान है ना. सुखी लोग नहीं जाते भगवान के. हरे कृष्ण. So Maharaj Chitraketu was enjoying the kingdom, but he was not at all ready to understand the spirituality. So when Angira Muni came, Angira Muni said that as the water sends the sand, force of water can separate the sand. Similarly, the force of time will separate all of us. अभी आप लोग साथ में है ना, कुछ समय के बाद देखिए सब ऐसे अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि समय का फोर्स बहुत पावरफुल रहता है. ये समय अपने को अपनों से भी दूर कर देता है क्या नहीं? जैसे आप अभी यहाँ पे है, आपके माता पिता
फिर यहाँ पे आके आप समझो किसी के साथ जुड़ गए, कोई आपका फ्रेंड बन गया, जीवन साथी बन गया, फिर आप जुड़ गए, तो वो समय ने जिसको आपको दूर किया था, वो समय ने आपको इकट्ठा कर दिया किसी के साथ। फिर कुछ समय के बाद और दूरियां बन जाती, फिर नए संबंध होते हैं, है ना? तो ये रिलेशनशिप्स इन द लाइफ आर temporary. Don't take it too seriously, which means that it is not too seriously means that do not get disappointed for small things. किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो ठीक है, doesn't matter. Do not take illusion very seriously, which means that if you go to the movie theater, don't start crying. रोना मत, क्योंकि वो मूवी है, मूवी कोई सच नहीं होती है ना। डरना मत, अगर रात में सपना आए तो डरना नहीं है कि शेर आ गया तो भागना है वहां से, क्योंकि सपने का शेर कभी काटता। वैसे ही जीवन में छोटी मोटी चीजें होती रहती है ना। कभी दुख आ जाए तो बहुत डिप्रेस नहीं होना है। महाराज चित्रकेतु का बेटा चला गया और उनको इतना दुख लगा कि महाराज चित्रकेतु अपने आप को खो बैठे। महाराज चित्रकेतु जीवन को नहीं समझ पाए। जीवन में लोग आते हैं तो बिछड़ भी जाते हैं, है क्या नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? When you have family and friends, your father, mother, one day the time will come when they will have to leave their bodies. We will have to leave our bodies. The things will happen in our life, Like my parents, they left their bodies. Our parents will leave. Our family members will leave. Somebody will leave first, somebody will leave second. But everybody will have to go, right? So Maharaj Chitraketu, when he lost the child, he was not happy. Because death is something very, very torturing thing in our life, right? So Angira Muni said to Maharaj Chitraketu, so when the seeds are sown in the ground, they sometimes grow into the plants and sometimes do not. Sometimes the ground is not fertile and sowing of the seed is unproductive. Similarly, sometimes a prospective father being impelled by the potency of supreme law can get a child, but sometimes conception does not happen. Maharaj Chitraketu had not got any child in his fate. उनके जीवन में कोई बच्चा ही नहीं था। पहले से अंगिरा मुनि ने बताया था कि आपके जीवन में कोई बच्चा नहीं है, लेकिन महाराज चित्रकेतु उनको बहुत आग्रह कर रहे थे कि कुछ भी करके मुझे बेटा दीजिए। तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि देखिए, बेटा आएगा लेकिन वो आपका हर्ष और शोक, सुख और दुख दोनों का कारण बनेगा। तो चित्रकेतु ने कहा ठीक है, चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा आया तो बहुत खुशी हो गई, लेकिन बेटी की मृत्यु के बाद वो पागल हो गए। तो यहां पे अंगिरा ऋषि कहते हैं कि जैसे कि कुछ जमीन में आप कितना भी बीज डालो, उसमें कोई पेड़ नहीं आने वाला है। वैसे ही कभी कभी अपने जीवन में अगर कोई बच्चा, फैमिली नहीं लिखी है तो क्या करें, ज्यादा उसके ऊपर। Therefore, one should not lament over the artificial relationship of parenthood. देखिए, ये जो रिलेशनशिप है, all the relations, whether father, mother, husband, wife, all of them, they are relative. Relative in the sense, the name is relative. What is relative means? It is not absolute, है ना? Relative यानी क्या कि जो अभी आपको चलता हुआ दिख रहा है, जैसे आप स्टेशनरी गाड़ी में बैठे, एक ट्रेन में बैठे, जो स्टेशनरी है, नहीं हिल रही है, और बाजू में ट्रेन चलती है, तो आपको क्या लगता है? आपकी गाड़ी भी हिल रही है ना। उसको कहते हैं रिलेटिविटी। रिलेटिविटी यानी क्या? एक्चुअल मूवमेंट नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि मूवमेंट है ना। जैसे कि आप पानी में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं कुछ दिन के बाद, तो आपको लगता है आप अभी भी ट्रेन में चल रहे हैं, है ना। इल्यूजन होता है ऐसा। वैसे रिलेटिव यानी क्या? तो एक्चुअल में नहीं है लेकिन लगता है कि है, उसको रिलेटिव कहते हैं। जैसे कि आप कोई समुद्र किनारे खड़े हैं और आपको लगता है कि समुद्र इतना सा छोटा है, रिलेटिव, है ना, लेकिन सन इतना छोटा है लेकिन सन बहुत बड़ा है। वैसे ही रिलेशनशिप यानी रिलेटिव। रिलेटिव यानी नहीं है फिर भी लगता है कि अपना है। समझ में आ रहा है? सो अंगिरा मुनि कह रहे हैं कि रिलेशनशिप ऑफ पेरेंटहुड, जैसे, तो ऑल ऑफ देम आर कंट्रोल्ड बाय सुप्रीम लॉर्ड। जैसे हम सब है, आप सब ने अपने माता पिता सिलेक्ट किए थे। एनीबडी चूज योर पेरेंट्स? नो।
डिड योर पेरेंट चूज यू? नो, है ना। देखिए हमारे कर्म के हिसाब से हमें माता पिता मिले, है ना। जैसे मेरे माता पिता है नहीं अभी तो, लेकिन जो माता पिता थे तो उनको ना तो मैंने चूज किया था, मैं तो शायद अफ्रीका में कहीं जन्म ले सकता था या कहीं अमेरिका में जन्म ले सकता था। मेरा जन्म कहाँ हुआ? तो भारत भूमि में हुआ। देखिए भारत भूमि में जन्म होना बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि भारत भूमि में सभी पवित्र नदियां हैं। सभी भगवान के अवतार कहाँ पे हुए? कनाडा में। कहाँ पे हुए? भारत में। सभी धार्मिक स्थल कहाँ पे है? देखिए धर्म के सबसे पवित्र स्थल भारतवर्ष में मिलेंगे, है ना। हरे कृष्ण बेटी। यस यस। सो वी ऑल आर लकी, वी आर लकी टू हैव birth in a good family, the good culture, good background, but this all happened due to arrangement of कर्मणा देव नेत्रेण। प्रकृति भगवान के नियमों से होता है सब, है ना। किसको कहाँ जन्म मिलना है ये भगवान के नियमों से। और कौन से नियम है ये? कर्म के सिद्धांत, है ना। भगवान ने कुछ नियम बनाए हैं, तो कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही सबको जन्म मृत्यु का चक्र चलते रहता है। ये रिलेशनशिप जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी टिकती है? 100 साल तक मैक्सिमम, उसके ज्यादा नहीं, है ना। तो अंगिरा मुनि कहते हैं कि राजन आप बहुत दुख कर रहे हैं। रिलेशनशिप ये, ओ किंग, बोथ यू एंड वी, योर एडवाइजर्स, वाइफ्स एंड मिनिस्टर्स, एज वेल एज एवरीथिंग मूविंग एंड नॉन मूविंग थ्रू आउट द एंटायर कॉस्मोस आर इन अ टेम्पररी सिचुएशन। सब कुछ रिलेशनशिप क्या है? टेम्पररी है। यस और नो? आप लोग समझते हैं क्या? नहीं? अब यू ऑल अग्री और रिलेशंस आर टेम्पररी? यू अग्री और नॉट? यस और नो? अगर कोई चीज टेम्पररी है तो किसका कितना सीरियसली लेना चाहिए उसको? कितना सीरियसली लेना चाहिए? बहुत ज्यादा सीरियसली। पागल नहीं होना चाहिए उसके पीछे। डू नॉट गो क्रेजी पे। उससे भी बड़ी रिलेशनशिप क्या है? ये देखिए, एक टेम्पररी है, एक परमानेंट है। देखिए आप हमारे जो भी रिलेशन है, भाई बहन माता पिता, वो सब कौन से हैं? टेम्पररी। परमानेंट क्या है? आत्मा और परमात्मा का संबंध। देखिए आपको शरीर कोई भी मिलेगा, जैसे मुझे आपका शरीर मिला और आपको मेरा शरीर मिल गया, क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या फर्क पड़ेगा मुझे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसमें जो आत्मा है, उसका जो परमात्मा के संबंध है वो क्या है? वो परमानेंट है। तो विच वन वी शुड टेक सीरियसली, टेम्पररी और परमानेंट? देखिए दो जॉब है, टेम्पररी जॉब भी है, परमानेंट भी है। तो आपको कौन सी जॉब चाहिए? क्योंकि बेनिफिट ज्यादा है ना। परमानेंट जॉब में तो बेनिफिट मिलते हैं ना, सिक लीव मिलेगी, हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, डेंटल बेनिफिट भी मिलेगा, और साथ में बीवी बच्चों का भी ध्यान रखेगी गवर्नमेंट, उनको भी बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिलेगा। तो कौन सी लेंगे आप, टेम्पररी या परमानेंट? कुछ लोग टेम्पररी लेना चाहते हैं तो नहीं लीजिए। तो वैसे ही हमारे जो संबंध है, परमानेंट कौन सा है? भगवान के साथ। देखिए शरीर तो बदलना पड़ेगा ना, लेकिन भगवान एक ही है। इसलिए ये शरीर में भी भगवान के साथ का संबंध नहीं छोड़ना। देखिए मुझे आपका शरीर मिल गया, आपको मेरा मिला, मेरे प्रॉब्लम आपके हो गए, आपके प्रॉब्लम मेरे हो गए, खत्म, मैटर इक्वल हो गया, प्रॉब्लम तो आ ही गई ना। लेकिन अगर परमात्मा के संबंध जुड़ गया तो जो बेनिफिट परमानेंट जॉब के हैं वो सब मिलेंगे। यानी क्या? तो भगवान आपके पीछे सब कुछ लुक आफ्टर करेंगे। हाँ। तो अंगिरा मुनि कहते हैं महाराज चित्रकेतु को, बिफोर अवर बर्थ दिस सिचुएशन डिड नॉट एग्जिस्ट एंड आफ्टर डेथ इट विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट। इज दैट करेक्ट सेंटेंस? अभी जो आप परिस्थिति में हैं, क्या आपके जन्म के पहले ये परिस्थिति थी? नहीं। और मृत्यु के बाद नहीं रहेगी। तो ये सब कुछ टेम्पररी है। Therefore our situation now is temporary, though although it is not false, है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में कोई दुख भी आ जाए ना, तो बड़ा दुखी होने की जरूरत
दुख आ गया तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सुख आया तो भी क्या फर्क पड़ेगा, दोनों टेम्पररी है. यस और नो, यस और नो. सो डोंट वरी अबाउट इट टू मच. दुख आ गया तो ठीक है, सुख आ गया तो भी ठीक है, क्योंकि दोनों टेम्पररी है. ऐसा कोई परमानेंट है तो मैं बड़ा पार्टी रख सकता हूँ कि भाई चलो आज के बाद मेरे जीवन में दुख नहीं आएगा, मैं पार्टी देता हूँ बहुत बड़ी. लेकिन ऐसा होने वाला है तो पार्टी का कोई सवाल आता ही नहीं है, क्योंकि टेम्पररी है ना. टेम्पररी जॉब में कोई पार्टी नहीं देता है, परमानेंट मिलेगी तो देंगे एक बार, है ना. छोटी छोटी चीजें अभी रोज पार्टी देंगे तो क्या करेंगे, काम नहीं रहेगा फिर तो. इसलिए भगवान यहाँ हमें भगवत गीता में भी समझा रहे हैं अर्जुन को, ये है अर्जुन, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति. जैसे कि आपका शरीर जब आप बच्चे रहते हैं तो शरीर छोटा रहता है, फिर आप बड़े हो जाते हैं तो शरीर बदल जाता है, तो नया पासपोर्ट निकालना पड़ता है ना. क्योंकि पासपोर्ट में भी फोटो बदलना पड़ता है हर 5 साल के बाद. क्यों? क्योंकि दाढ़ी नहीं है, अभी दाढ़ी आ जाती है, फिर मूछें आ जाती है. तो बड़े होते जाते हैं ना, तो पासपोर्ट की पिक्चर भी बदलने पड़ते हैं. और फिर जब आप 25 साल, 50 साल, 75 साल, शरीर बदलते जाता है क्या नहीं? यस और नो? योर बॉडी इज चेंजिंग, इज दैट राइट? यू ऑल अग्री और नॉट? Similarly, you change your body at the time of death. So we have to be understanding this, and in that perspective, we have to take the whole life. So what is that perspective? Don't take failure or success very seriously, because both are both are temporary. Both are the same side of a coin. Whether you look at a head or a tail does not matter. It is a package deal. What is the package deal? Package deal means you have to suffer through both happiness and failure, both. So, therefore, situation is temporary, although it is not false. As from one seed, another seed is generated. O king, so from one body, another body, a third body is generated, right? So जैसे कि मेरे पिताजी ने मुझे जन्म दिया, मैंने और बच्चों को जन्म दिया, एक बॉडी से दूसरे, एक शरीर से दूसरा शरीर. जैसे एक सीड से दूसरा सीड तैयार होता है ना, क्योंकि उसमें से पेड़ निकलता है, पेड़ से दूसरे सीड तैयार होते हैं और दूसरा पेड़. तो क्या फर्क पड़ रहा है? इट इज ऑल as the elements of material body are eternal, the living entity who appears through this material elements is also eternal, है ना. तो शरीर कैसे बना है? तो पंच महाभूत, है ना. जब हमारे शरीर की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? जलाया जाता है ना. या फिर कुछ संप्रदाय में उसको दफनाया जाता है, या कुछ संप्रदाय में उसको पशु पक्षी को दिया जाता है ना. आखिर में तो क्या होता है? पंच महाभूत में शरीर विलीन हो जाता है. यस और नो? है ना. तो क्या फर्क पड़ता है? पहले शरीर नहीं था, ये शरीर देखिए, अभी मेरी एज है 53. सो 53 years बैक दिस बॉडी डिडंट एग्जिस्ट. आफ्टर अनदर 20-30 years दिस बॉडी विल, इट इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट. So what is to worry about, or what is to lament about, which did not exist, which exists and will not exist? कुछ फर्क पड़ता है? It does not matter at all, right? The natural elements will remain there, like all the Panch Mahabhut will remain there. But what is eternal is the soul. The Atma will always remain there, right? So Angira Muni is saying, when I came first to your home, I could have given you the supreme transcendental knowledge. जब अंगिरा मुनि पहले महाराज चित्रकेतु के पास आए, तो अंगिरा मुनि को चित्रकेतु ने कहा कि मुझे बेटा चाहिए. तभी अंगिरा मुनि उनको ज्ञान दे सकते थे कि आपके नसीब में बेटा नहीं है तो क्यों इसके पीछे लगे हो. लेकिन अंगिरा मुनि ने सोचा कि ये राजा इसे मानने वाला नहीं है. But when I saw that your mind was absorbed into material things, I gave you the son. ठीक है, कुछ लोगों को जब तक दुख नहीं आए ना, तब तक भगवान की याद नहीं आती है ना. यस और नो?
अगर भगवान पहले ही याद आ जाए तो दुख कभी नहीं आएगा। लेकिन महाराज चित्रकेतु पहले से ही भौतिक चीजों में थे, तो जो भौतिक चीजों में पड़े हुए लोग हैं उनको भगवान के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप भगवान के बारे में बताएंगे तो भी वो नहीं सुनेंगे। तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि ये राजा कुछ सुनने वाला, तो इसको बेटा दे देते एक बार, फिर ये सुनेगा, क्योंकि इसको दुख जब आएगा ना तो वो बराबर आ जाएगा मेरे पास। सो अंगिरा मुनि ने उनको कहा कि मैं आपको बेटा देता हूं, लेकिन ये बेटा आपका सुख और दुख दोनों का कारण बनेगा। My dear king, now you are actually experiencing the misery of a person who has sons and daughters. देखिए, बच्चा होना इसमें भी बहुत दुख है। जब अपने बच्चे अपने से दूर चले जाते हैं तो बहुत दुख होता है। जब आप अपने माता पिता से दूर हुए रहेंगे तो उनका दुख शायद आपको मालूम नहीं है। शायद आप मालूम जब भी करेंगे जब आपके बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे, है ना। देखिए, हमारे दोनों बच्चे हैं, वो हमारे से दूर चले गए, अभी वो रहते हैं हैमिल्टन में। तो जब बच्चे अपने से दूर हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि एम्प्टी नेस्ट, इट इज अ डिफरेंट फीलिंग। तो महाराज चित्रकेतु को कहते हैं अंगिरा मुनि कि मैं आपको तभी समझाता था कि बच्चों है तो भी दुख है, तो आप समझते नहीं थे, तो अभी आपको तो समझ में आ रहा है। ओ किंग, the owner of the state of Surasen, one's wife, house, opulence of the kingdom, and various opulences and objects of the sense perception are all the same in that they are temporary. जो चीज आपको आज सुख दे रही है वही चीज आपको कल वही चीज, यानी क्या, देखिए आप कोई व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं, आज आपको बहुत प्रेम है उनके साथ, और कल आपका और उनका झगड़ा हो गया, आप सेपरेट हो गए, फिर क्या होता है, बहुत दुख आता है। तो जो चीज आपको सुख देती है समझ लेना आपका दुख उसमें ही समाया हुआ है। यस और नो, यू ऑल अग्री और नो? जैसे कि आपका सेल फोन आपको बहुत सुख दे रहा है ना आजकल, हाँ, यही सेल फोन दुख का कारण बनेगा। कैसे? जब वो चोरी हो जाएगा तो आपको 2-4 दिन तो नींद नहीं आएगी तो जीवन में जो इंदिरा मुनि कह रहे हैं कि ये जो बच्चे वगैरह सोच रहे हैं पैसे, धन, ऐश्वर्य, जैसे जिसको लगता है कि जो इसके पास पैसे हैं उसको प्रॉब्लम क्या है, तो पैसे मल्टीप्लाई कैसे करेगा। जिसके पास पैसे नहीं है वो बोलता है पैसे कैसे कमाऊं। हाँ, तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर एवरीवन। One's kingdom, military power, treasury, servant, ministers, and friends and relatives. They are all cause of fear, illusion, lamentation, and distress. Because they are impermanent, they are no better than illusion, dream, and mental concoction. जैसे मैं बता रहा था, do not take illusion or delusion very seriously. क्या बता रहे हैं अंगिरा मुनि? डिल्यूजन या इल्यूजन, इसको क्या कहते हैं? जैसे कि स्वप्न में मैंने बताया ना कि अगर स्वप्न में आपको लायन टाइगर दिख गया, इफ यू सी अ लायन और टाइगर इन द ड्रीम, डू नॉट गेट स्केयर्ड टू मच, बिकॉज डू नॉट स्टार्ट शाउटिंग टाइगर आ गया टाइगर, because there is no tiger, right? Similarly, do not take the things in the life too seriously, because all of them are delusions. The life is complete delusion actually, because it does not exist. Whatever you are experiencing now did not exist 20-30 years back, will not exist after few years. So this is all, the entire life is a delusion. Now what do? This is a great challenge, right? Is that right or wrong? Actually this is a delusion. Whatever we are doing, अगर आप है ना कल का न्यूज़पेपर आज कोई बाय करेगा? Will you buy yesterday's newspaper today? Even somebody gives you a 50% discount. Will you buy? If I give you buy one get one free, will you buy? Buy one get 3 free. अरे बाबा नहीं चाहिए न्यूज़पेपर, क्यों?
क्यों नहीं चाहिए कल का न्यूज़पेपर? Because it doesn't exist anymore. All the things which have happened yesterday, I'm not interested because those were gone. Are you interested in the dream which happened yesterday? No, because it's gone. Is that right or wrong? So this everything happening in our life is a complete delusion. It's like a newspaper which is outdated. So, so they are no better than illusions, dreams, and mental concoction. These physical objects like wife, children, and property are like dreams and mental concoction. Actually, what we see has no permanent existence. It is sometimes seen, sometimes not seen. Only because of our past actions do we create such mental concoctions, and because of this concoction, we perform our activities. Actually, because of our some karma in the past, we get relationship. वो कहते हैं कि जिसके साथ आपकी बहुत शत्रुता होती है ना पिछले जन्म में, वो आपके पति या पत्नी बन जाते हैं. एक्चुअल में आपने सुना रहेगा या नहीं सुना है, मालूम नहीं है. अब अगर शादी नहीं है तो समझ जाएंगे फिर. हाँ, जो आपके बड़े शत्रु है ना वो आपके पति या पत्नी बन जाते हैं. फिर देखो धमाल. तो अंगिरा मुनि यही कह रहे हैं. क्या रहे अंगिरा मुनि कि बिकॉज ऑफ योर कर्मास you have relationship. Is that right? So how much seriously should we take this relationship? कितना सीरियस लेना चाहिए? अनिल प्रभु कितना सीरियस लेना चाहिए? How seriously should we take it? One who was not a wife 20 years back. आपके ये 20 साल पहले वाइफ थे. 20 साल के बाद की गारंटी बोल नहीं सकते. तो कितना सीरियसली लेना है हमें सोचना है सब कुछ. इज दैट राइट? हरे कृष्णा. सो लास्ट so this is a very interesting story of महाराज चित्रकेतु. तो क्या सीखने को मिला आपको ये बातचीत? अभी तो स्टोरी खत्म नहीं हुई है. ये कथा में बहुत इंटरेस्टिंग रोमांचक टर्न है. इसके बाद वो अभी बाद में बात करेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है. वी हैव हार्डली 1-2 minutes left. But what did you learn from all this moral of the story? Let's start from here. What did you learn from this story? What did you learn? Can you say loudly, please? Relationships are not permanent. Yes. Everything is not permanent in our life. Yes, Radhika bhai. Life is a total delusion. That is absolutely correct. Actually, we are drugged. है ना. ड्रग में रहता है आदमी कैसा ऐसा घूमते रहता है. उसको लगता है सब कुछ सही है. ड्रग जो दारू पीता है ना वो ऐसा डिल्यूजन में रहता है. वो एक नशे में रहता है ना. वैसे हमें नशा क्या है? व्हाट इज अवर नशा? डिल्यूजन. व्हाट इज अवर डिल्यूजन? एवरीथिंग इज रियल ऐसा लग रहा है ना. सब कुछ सच लग रहा है ना. सब कुछ सच लग रहा है. एक्चुअल में खत्म होने वाला है. जैसे आंख खुलेगी बाय गॉड खत्म हो गया सब कुछ. यस और नो? ओके, व्हाट इज योर टेक होम मैसेज? प्रभु जी इन येलो टी शर्ट. व्हाट इज योर नेम प्रभु? यू आर द ओनली वन विद येलो टी शर्ट इन होल ऑडिटोरियम. व्हाट इज योर नेम? संकल्प. हाँ संकल्प बताइए. व्हाट इज योर टेक होम मैसेज फ्रॉम द महाराज चित्रकेतु's कथा? हाँ ज्यादा सीरियस मत लो यार. डोंट टेंशन मत लेने का. टेंशन नहीं लेने का. आराम से जीने का. यस. What is? Oh, you just came, right? You appeared just now. Anybody who was there from the before? Okay, let's go from here. Yes, Prabhuji. We can contain whatever you have and do not run after temporary ones. Very good. What is his conclusion is that do not run after the things, you know. Whatever you have, जो नसीब में है वो मिलेगा. नहीं है तो भागना नहीं है. क्योंकि why should not be run? You are going to disappear. Because it's all delusion, right? कितना भागेंगे? भाग भाग के कहाँ तक भागेंगे?
क्योंकि वो तो मिराज है ना, मिराज में बहुत जल्दी भी मिराज के पास पहुंचेंगे तो पानी मिलने वाला है, मिलेगा? वो तो मृगजल है, चला जाएगा। प्रभु जी, हाँ, वेरी नाइस। फेलियर इज वेरी गुड न्यूज एक्चुअली। व्हेन यू फेल इज अ वेरी गुड न्यूज। व्हाई? Because the next story is the success. So failure is a good news. You should celebrate the failures. Why? Because the success is very close. Huh? Failure is, so जीवन में दुख और सुख, which is better? दुख के बाद सुख आएगा और सुख के बाद दुख आएगा, तो which is better? किसको सुख चाहिए? तो फिर दुख आने वाला है, और किसी को दुख चाहिए तो सुख आने वाला है। क्या चाहिए आपको प्रभु? कुछ नहीं प्रभु सीख गए प्रभु जी, आ गए। क्योंकि दोनों दोनों टेम्पररी है ना, both are same actually, right? Head or tail, doesn't matter, right? So it's a very interesting story, and it makes your life, makes your life easy, right? Because we don't have to worry too much. चिंता करके कहाँ जाना है? जैसे आज आपने 1 करोड़ रुपया कमा लिया, कहाँ जाएंगे? यहीं रखना पड़ेगा कितना भी मिला यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, तो क्यों टेंशन नहीं लेने का? हाँ? So here, the most important thing out of this message is that the temporary relationships versus permanent relationships. What is important is, and that is with Paramatma. So more we run for the material things, we'll fail in our life. The unhappiness will come. Because the material thing chasing is like a drunkard condition. More you live materialistic life, it is as good as living in a delusion. You understand? Delusion, that you are living in the same false concept that this is going to last ever. It is not going to last ever. We are preparing as if we are going to be here forever. It's not going to happen. But what is going to be ever is the relationship with Krishna. So in this life, spend as much time required for keeping body and soul together. अगर 8 घंटे से काम करने से आपका शरीर ठीक रह सकता है तो बस 8 घंटे काम करिए, और बाकी के 16 घंटा किस में लगाइए? स्पिरिचुअलिटी में लगाइए। If you have to work only for 6 hours, do not work for 7 hours. Use remaining 7 hours, 17 hours for spiritual growth. Because if you work all the time for the body is going to cheat you. All the relations are going to cheat you. लोग कहते हैं कि हम मेहनत करते हैं फैमिली के लिए, लेकिन that is not going to come with you. What is going to come with you is what you spend for your spirituality. Because the spirit is going to be ever, the body is going to change, right? So hard work for the body is going to get wasted, but hard work for the soul will come with you. So it is your choice. Life is all about choices you make, right? So if you choose Krishna, it is permanent. If you choose the materialistic way of life, that is your choice. It is temporary. You choose temporary or permanent. It is your choice. Nobody is going to force you. भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता बताई, फिर अर्जुन को कहा कि अर्जुन, मैंने भगवत गीता तो आपको बता दी है, डू एज यू विश, आपको जो करना हो करिए, मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि ये करिए वो करिए, मैंने तो भगवत गीता आपको बता दी है। फिर अर्जुन ने कहा कि नहीं भगवान, करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे वही करूंगा मैं। तो अर्जुन की विजय हो गई। तो वैसे ही हमें अगर जीवन में सच में सुख और शांति चाहिए, सच में सुख और शांति, जैसे भौतिक चीजों से सुख मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो टेम्पररी है ना? जैसे कि पिज्जा से आपको सुख मिलता है, लेकिन कितना है? जब तक पिज्जा मुंह में है तब तक, बाद में सुख खत्म हो गया। लेकिन स्पिरिचुअलिटी का सुख परमानेंट रहता है। अगर आपको एक बार भगवान के नाम में सुख मिल गया तो आपको खाना नहीं है तो भी चलता है। लोग नाम के ऊपर भी जीवन निकाल देते हैं। जैसे कि शबरी थी, शबरी के पास रहने के लिए कुछ नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन भगवान के नाम के ऊपर हजारों साल निकाल दिए शबरी ने।
एक बार भगवान से आपका रिश्ता जुड़ गया तो फिर कोई चिंता, ठीक है। Vendraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. So please come, we'll do Aarti and after that we'll have Prasadam. Then please take Prasadam and go. आइए सब लोग आगे आ जाइएगा और हम आरती करते हैं. थोड़े से आगे आ जाइएगा ऋषि कभी.